first class cricket in the 60s for Sindh. As the cricket buffs here will know that Malik Mohammed once made 499 in a first class match. And in the innings before his 499, he was dismissed by a left arm spinner who is sitting right here. तो खबर भाई देख रहे हैं मोहम्मद को dismiss किया हुआ कि मुझसे यहाँ किसी और हमने मिसिंग नहीं किया. And then he's covered a number of test matches, more test matches than any other person, more than 450 covered by 453 tests. 453 was. And it's published in all the leading newspapers in the world, and it's covered and commentated in cricket around the cricket world. Next, I'm going to then invite Dr. Salman Farid. Dr. Salman Farid is our third panelist, और हमारे भाई के अलावा ये has a fantastic cricket library, which is going into the thousands of books. Am I right? And you have all the editions of wisdom going back to 1945. Pre-partition citizen भी आ रही है. And he has followed cricket with passion, extremely knowledgeable, encyclopedic draft. And you have noticed for the last 3 years you've been writing the sports column in the news. Yeah, for 4 years. Yeah, for 4 years. Every Sunday he has a cricket column in the news. So this is our panel. And I guess I'll take a seat now. अच्छा, सो क्रिकेट के हवाले से ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है या ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे माशरे का बहुत ही एक की एलिमेंट है. It gives us a lot of pleasure, but it also gives us a lot of pain. I guess that's just part of the human condition because you can't have one without the other. It's been one of the few things that bring the country together and that bring hope and inspiration to the people of our society. So the elements in cricket obviously are where it stands as a sociological phenomenon. Then of course there is this issue of governance, how are we doing with administering the game, and then there is the all important element of how have we performed in cricket on the world stage. So I'm going to start my first question to you, Hadil, and I'd like you to comment on where in this whole concept of being a Pakistani or being in Pakistan, or for lack of a better term, Pakistaniyat, where in Pakistaniyat do you think does cricket fit in modern times? So I think when you think of the Pakistaniyats, a part of me sort of blames and attributes it to the 1992 victory, because as Pakistanis we're consistently told that we are resilient, that no matter how much you get knocked down, you can come back up. And every time somebody talks about it, it's somehow, whether it's textbooks, whether it's in conversation, moments, you always think back to the 1992 World Cup. I was too young to even remember it, but it's become a stuff of legends. And so what ends up happening is that actually tells you that we were almost out. And then to come out and to win a World Cup the fashion that we did, it's almost become who you are as a Pakistani. And that, I think, is why we hold on to it so much. I think that's why it's become a part of our identity. And I think that's why cricket is the one thing that has survived and has thrived for all of us. So 92 World Cup जो है, in fact, when we met, we had a small meeting couple of days ago to discuss the panel. So Hadil से मैंने पूछा कि what was the first proper cricket series or activity or tournament that you followed, and she said that it was the 1999 World Cup. And then she lamented कि जो सारी achievements हैं वो तो मैं सुनती रहती हूँ बड़ों से कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने हनीफ देखा, इमरान देखा, मियादाद देखा, and all that. So yeah, I mean 92 is a shadow. I mean it's cast such a long shadow that even for some people of your generation, 92 is still the apex. And as you know, each time a new World Cup approaches, people try to say कि oh 92 में भी ऐसा हुआ था कि the captain had 5 letters in the first name, and yes. So this time also Babar has 5 letters in the first name and so forth. So absolutely 92 is really so. But in terms of what does it mean to us as Pakistanis that we have cricket as a source of pride and as a source of something to feel good about, because I mean as a developing country there's a lot going wrong, as we all know, but would you say that this is one of the few things that would really count as a positive in our lives? I think that there's a lot of things in Pakistan in which we're far behind.
And cricket is one of the few things that we think sets us apart and that we can be number one, right? As you mentioned, I was the unfortunate generation that has seen a lot of pitfalls and downfalls of Pakistan cricket. But we've had moments of madness. We've had the 2017 Champions Trophy. We've had the 2009 T20 World Cup. And I think those are the things that keep us going every single time. And when you talk about it from just a sociological point of view as well, I think for me or for just generally Pakistanis, we've made it a part of our identity. We want it to be a part of our identity because there's very few things we can get excited about, but this is one of those things. And like you mentioned, I wasn't part of the 80s generation or the 70s or pretty much any of those generations that saw the trophy wielding or those big moments of madness. So success, as we've talked about, we've seen a fair amount of success, international level success from Pakistan in the cricketing world. और successful होने के लिए किसी भी sport में, the way I see it, you need three elements. You need certainly talent. You certainly need a fan base. You need an audience that the talent will perform for. But I think a key part of putting those two together is the management and the administration of the sport and of the talent. So, Kamal bhai, let me come to you. So, sometimes people say that Pakistan cricket has performed well despite the Pakistan Cricket Board. मुझे थोड़ा सा इस पे ज़रा रोशनी डालें, आप में तो बहुत गहरी नज़र है आपकी इन सब चीज़ों पे कि in terms of the governance of the game, what are the good parts, what are the parts that are lacking in Pakistan? Very interesting, the word governance. Governance means accountability, transparency, reliability, honesty. What I know of Pakistan cricket since 50s as a player and later as a journalist, there has not been any governance in the Pakistan Cricket Board, and yet we produce some great champions of the world like Zahir Abbas, Hanif Mohammad, Mushtaq Mohammad, Waqar Hassan, Saeed Ahmad, and you name it. And before I say anything more, I would like to welcome a colleague of mine, a very eminent figure in cricket, in the world, in international cricket, who's sitting right in front of me, umpire Mahbub Shah. He officiated World Cup final in '87, Australia versus England. So he was a World Cup final umpire. His son is a rear admiral now. Very fine cricketer, Mahbub Shah was. Welcome, Mahbub sir. And, We are all huge fans. And I played a lot of cricket with him at university and at first class level. Mashallah. Governance, since I know from 50s onwards, because I did my matriculate in 1954, so I've seen Qaid-e-Azam before partition in Hosho Hawas, and I migrated to Pakistan and got interested in cricket. I became BBC cricket correspondent for 32 years, of Times correspondent, Reuters, AFP. I made my journalistic career in England. Governance, if there was good governance in Pakistan cricket, Pakistan would have been one of the top nations of the world. The problem is that there are no systems in place, never been. There were isolated people who had good governance, like the first cricket captain of Pakistan, Abdul Hafiz Kardar, Air Marshal Noor Khan. The problem here is that people here are selected, not elected. In rest of the world in cricket, most of the people from chairman down the ladder, they are mostly elected people. In Pakistan cricket, there have never been elected people. The head of the state, president first, prime minister later. They used to nominate a chairman without any knowledge of cricket or cricketers or the play or players. I could tell you a very fantastic, very brief story about governance and the people who ruled Pakistan cricket as administrators. I used to come from London to cover with various teams to Pakistan to cover test series. And in one of the test series in Pakistan in 1987, a very infamous test series,
in which an England captain, Mike Gating, and the Pakistani test umpire, Shakur Rana, got a tiff, an argument in the test match, which became an international scandal. I was covering the test match for BBC, Reuters, and a London paper. And I knew everything what happened there. So the England captain was asking for apology from the Pakistani test umpire. The Pakistani test umpire was asking apology from the England captain, Mike Gating. A day's play was lost, and it became an international scandal. So I went to the dressing room of the test umpire, and I said, Shakur bhai, ये इंग्लैंड का जो कैप्टन है, ये कहता है आपने उसको गालियाँ दी हैं. तो वो कहने लगे मुझसे, कमर भाई, यू नो माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई नो वेरी लिटल, और गालियाँ तो मुझे आती नहीं है अंग्रेज़ी की. तो वो जो कुछ भी कह रहा था मैं उसको रिपीट कर रहा था. तो वो कह रहा था यू स्वाइन, तो मैं उसको कहता था यू स्वाइन. जो कहता था यू सो एंड सो, वो कहता था मैं यू सो एंड सो. तो ये गालियाँ हम दोनों में, जब आप समझते हैं गालियाँ थी तो वो चल रही थी. बहरहाल वो जब हो गया और बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, तो द पाकिस्तानी चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, अब आप सुन लें बड़े गौर से इसको, आप, ये आपको कोई और नहीं बताएगा. पाकिस्तानी चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड फ्रॉम द इंजीनियरिंग कोर, Defense Forces, was the chairman. He appointed two eminent people of Pakistan to write an investigative report about what happened actually between the England captain and the Pakistani umpire. तो जब वो तैयार हो गई रिपोर्ट, तो chairman of the selection committee, who was a test player, Hasib Hassan, said to me, before you go to England, you come with me, fly with me to Lahore. You read the report of the two eminent people who have written this about this incident, because you covered the series, and you let us know if there is a flaw before we send this to ICC or England cricket boards. So I flew to Lahore with this chairman of the selection committee, Hasib Hassan. I entered the chairman's room, a chairman from the engineering corps of defense forces. And he said to me, आप हंसेंगे इस बात पे. उसने कहा, कमर साहब, ये क्या है कि मैं पिछले 2.5-3 साल से बोर्ड का चेयरमैन हूँ, and you never came to see me, never interviewed me, you are a BBC man, और ये जितने जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और दुनिया के मेरा इंटरव्यू करते हैं, तो मैं दिल में बहुत खुश हुआ. मैंने कहा, सर, with due apology, when you were appointed as the chairman of the Pakistan Cricket Board, you gave an official statement. मैं क्रिकेट का बिल्कुल पैदल आदमी हूँ, मुझे न क्रिकेट आती है, न कभी की ज़िंदगी में क्रिकेट देखी है, और मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अब मैं कुछ सीखूँगा. तो मैंने दिल में ये सोचा एज ए रिपोर्टर कि मैं आपका टाइम क्यों ख़राब करूं आपसे मिलकर. कमर भाई, मेरी और भी सवाल है. अच्छा, सो लेट मी फॉलो अप. हाँ, तो मैं गवर्नेंस की बात बता. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, तो मेरा गवर्नेंस पे एक और फॉलो अप है. गवर्नेंस फॉलो अप ये, कमर भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक की कि सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड. अच्छा, सिलेक्टेड वर्सेस इलेक्टेड में यू वेरी राइटली सेड कि जो कि सक्सेसफुल बोर्ड्स हैं दुनिया में, उसमें जो लीडरशिप है क्रिकेट बोर्ड की वो इलेक्टेड होती है, रीजनल एसोसिएशन से ऊपर आते हैं, और फिर उनकी दे गेट टुगेदर एंड दे नॉमिनेट द पीपल एट द सेंटर. सो आई थिंक इसमें तो डिस्प्यूट नहीं है कि द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड शुड बी एन इलेक्टेड इंडिविजुअल, नॉट हैंड पिक्ड एंड स्पेशली अपॉइंटेड. माई क्वेश्चन टू यू इज, डू यू थिंक अ क्रिकेटर, अ फॉर्मर क्रिकेटर is better suited to be chairman PCB or a professional manager? Very interesting. It is not the job of a cricketer to be a governor of the game of cricket. In most of the cases in this world, most of the great administrators of cricket have not been cricketers. Very rare, including England, which is the mother country of the game. Right. So it is very wrong to say that if a cricketer was, क्रिकेटर्स तो साहब ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर, मेरी एक्सपीरियंस के अंदर मैंने 500 टेस्ट देखे हुए हैं, 453 टेस्ट कवर किए हुए हैं. ऐसे पैदल होते हैं क्रिकेटर के, उनको सिर्फ बैटिंग करना आती है, बॉलिंग करना आती है,
लेकिन क्रिकेट नहीं आती. अच्छा अब Two different things. Playing cricket is different. Knowing about cricket is totally different. well said and management you need professional management. Same thing here. बिल्कुल well said कमर भाई. अच्छा let me come to सलमान फरीदी. तो सलमान भाई हमने गवर्नेंस की बात की, हमने हदील से सोशियोलॉजी की बात की, आपसे मैं आता हूँ दी एक्चुअल क्रिकेट इटसेल्फ. And you know, I mean, all of us here, I would assume, have followed the game more or less quite closely. तो आपने मुझे बताया था कि जो सबसे पहली सीरीज़ आपने देखी थी, that was 1959 Australia coming to Pakistan. I presume you went to National Stadium, you watched the match right there, and you followed the game very closely since. Can you share some of the big highs that you got from following Pakistan cricket, and also then at the same time share some of the heartbreaking disappointments? Thank you. So my first match was not too far from here, National Stadium, 1959, Australia touring Pakistan, and we had a local mohalle ki team, and we all trooped along. I was like a 6-year-old then, and I was the youngest guy in the group, and we went into this open stand, no protection from the sun. You had this little thing with a rubber band and a little cap on. And it was a fascinating experience. I mean, I saw Intikhab Alam get a wicket with his first ball in Test cricket. I was very keen to watch this big Australian fast bowler called Ray Lindwall. But Lindwall had, I think, spent himself by then because he came in off a very shortened run-up and was a great disappointment. But so it was a high, and then from then on, as till I left Pakistan to train abroad, I tried to follow the game very keenly. Iske baad, I think the next series that I remember watching was Ted Dexter's side in 1961-62, and saw Dexter make this imperious 206, double century 204, in Karachi. Amazing experience. And Hanif had come fresh off a century in each innings at Dhaka. And then he was playing here, and Alimuddin, who went in ahead of him and whom I had met at a social event previously, in fact got a century. Hanif got 270s or 280s. The next one was 1963. Commonwealth team aayi hui thi yahan pe. And Charlie Griffiths, who'd broken Nari Contractor's skull and sent him into retirement. So Charlie Griffiths was here, and I still get shivers about when I think about this. लेकिन सुना है वो बट्टा कराता था. You couldn't make out. You okay? You just saw this big, huge guy coming into bowl. अच्छा उस ज़माने में क्या होता था कि या तो हम मोहल्ले की टीम के साथ जाते थे या I'd badger my mother and she would take me along. So we ended up sitting in the ladies stand, which used to be where point is or बिल्कुल मुझे याद है. ठीक है वहाँ पे हम बैठते थे. हम सब गए तो हुए. the Charlie Griffiths hit Imtiaz, who was captaining the team, Imtiaz Ahmed ko. He hit him on the head, and the ball took one bounce and went over the boundary, and Imtiaz just gave his head a little rub and was ready to take guard again. So that memory stuck in my mind. But then since then, I think the highs and lows, Saad, so many highs and so many lows. I think one of the highs was 1964, watching Australia play the solitary test match at the National Stadium, watching Khalid Abadullah and Abdul Qadir put on 249 for the first wicket, which was a record at the time. I saw Majid Khan, then known as Majid Jahangir, and Asif Iqbal make their test debuts. And the interesting thing, just as a little trivia, is that they both opened the bowling. And if you recall, 78-79 series, Majid and Asif opened the batting at the same National Stadium at which they had opened the bowling. फिर आपने माजिद की सेंचुरी बिफोर लंच भी देखी होगी कराची. Majid ki century before lunch, that was again a big highlight, and of course then because of Javed Miadad having come along and debut series and with this huge big impact factor. I also watched Colin Cowdery's team here, 68 wali, when there was a lot of crowd disturbance and there were political riots taking place against Ayub Khan's government, and the whole match was disrupted. I saw Zahir make his test debut and Sadiq make his test debut 1969 when New Zealand was here, and that was a sad moment in the sense because Hanif and Sadiq opened and Mushtaq came in at number 4, and as we learned subsequently, Hanif was pressurized by the administration to retire at the end of the game. But highlights agar aap dekhein, I mean if you follow Pakistan cricket. Actually मैं एक और सवाल आपसे, you're giving this thought in my head. So you've seen those figures, you've seen the Hanifs and the Fazals and all of those and Imtiaz.
Then you've seen the Miadas and the Imrans and the Zahirs. Then you've seen the Inzamams and the Yusufs and the Yunuses. Now you've seen the Babar Azams and the Rizwans and, you know, the South Shakils. What, I mean, how do you see this? What has given you more joy, and how do you see this evolving? Yeah, I think what has happened, the nature of the game's changed, Saad. The game that What was your favorite era, if I were to say? My favorite era, you know, I think as far as Pakistan batting was concerned, it has to be the 70s. I think that was probably the strongest batting side that Pakistan put up. My favorite series was, or the two series, 76, 77 tour of Australia and then tour of the West Indies, when I think Pakistan batting was at its peak. But what really got me enthralled was the bowling, when Wasim and Waqar and reverse swing, and Imran the 90s. at his peak. Imran at his peak. Imran at his peak, unfortunately, I didn't see Imran in Pakistan, I saw Imran in England. I was training, doing my post-graduation 82 there. ki series mein? 82 की series में I saw Imran, and I saw also, you know, the other thing that I saw was that Pakistan has often been accused, or Kamar bhai bhi ye keh rahe the, of biased umpiring. I saw how biased the umpiring was at Headingley, Leeds, and deprived Pakistan of a Salman bhai, win. ye bataएं, pick one heartbreak, one heartache in all the time you followed cricket, which is the most painful heartache that it still stings. 99 World Cup final. हाँ सही, मेरा भी वही है, I suppose. हाँ. I think that's really sad. I think that was the best ODI team that we had ever put up. You think it was better than the 92 team? I think so. Unfortunately, इस सवाल पे खंजर निकल आते हैं, तो I'm going to leave that aside. But it's such a sad thing that they lost. Chalein, let me come back to you, Hadil. So my question to you is that we've talked about, you know, Salman bhai very colorfully recreated the 60s, and then you've come to the modern times. And the game is evolving in very important ways. There's a lot of league cricket now. The shorter format is now the most popular, threatening to overrun all the other formats. And then just the nature of the bat ball conflict is changing. So, you know, floodlights and franchise cricket and very few test matches are ending in draws. The game is speeded up. So where do you see this going, and do you think this is a good thing? I guess it's inevitable, but... It is inevitable. I mean, when I think about it, I think it's evolved as humans are, right? So because of social media and things, our attention span has gone down a lot in life. Sitting to watch a 9-hour ODI or sitting to wait 5 days to see a test result that may or may not end in a draw is not really what we are built for now. And as the generations continue with TikTok and Instagram and everything, your generation has seen the greatest and all of that, but you had a lot of patience. Our generation, I don't think, has that much patience. We want to know what's happening after 4 hours of a game. And I remember when the IPL started and when T20 cricket happened also in 2007 when the first World Cup happened, people were like, this is not real cricket. In 2009, Yunus Khan was prosecuted basically for saying this is not really cricket, this is fun cricket. Ironically, we went on to win that World Cup. So I think that the game evolving is inevitable and it should happen. It is also interesting because cricket was always nationalistic and then leagues came into play and now you're seeing, you know, Babar Azam play with David Wiley, or you're seeing, you know, somebody, Haris Rauf play with Riley Russo. It is something that everybody is learning to accept. And I think if anything is going to help the actual game of cricket, which is allowing players and teams from associate nations actually get the exposure that they normally wouldn't get. Excellent point. And I think also it's bringing larger audiences into the fold. Yeah, it is, absolutely. I mean, you look at a player like Tim David, you look at players that were relatively unknown. You're talking about Singaporeans, you're talking about players like David Visa, like other players like that, who have played in the PSL or have played in the IPL, and you're seeing their lives change, and you're seeing more countries, and countries that may not necessarily be Commonwealth countries, picking up the sport and having that exposure. Excellent point. So this is really helping the game. The shorter format is helping the game spread. Exactly. Absolutely. कमर भाई आपसे मैं अब आपका जो फॉलो अप सवाल ये है कि वी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड द गेम क्रिकेट एंड पाकिस्तान, तो इसमें पाकिस्तान की जो इवॉल्विंग नेचर है क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. फॉर एग्जांपल रिवर्स स्वीप आपने ही मुझे बताया, हनीफ मोहम्मद ने, खैर इट्स डिस्प्यूटेड, हनीफ वर्सेस मुश्ताक. सो हनीफ, either one of the Mohammed brothers came up with the reverse sweep.
Sarfraz Nawaz came up with reverse swing, and then players like Imran, Wasim, and Waqar, they took it to a magical level. I believe neutral umpiring for the first time at the international level was Pakistan took the initiative. और आई थिंक बॉलिंग में दूसरा जो सकलैन मुश्ताक का दूसरा वो भी एक इन्वेंशन है जो कि विच हैज़ टेकन ऑन कॉट ऑन टू द वर्ल्ड. तो जो हमारी इनोवेशंस हैं पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ कमेंट ऑन दैट. हाउ हैव आवर इनोवेशंस एडेड कलर टू द गेम? I am very lucky to have seen and played with cricketers from 50s onwards. First as a cricketer and later as a journalist and commentator of this game of BBC. I've even met Sir Don Bradman. Not many have met. And interviewed him 3 times for the BBC. भाई थोड़ा पास कर ले माइक को, and, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. And I've seen all the small and greats. बात दरअसल ये है कि हर एक आदमी की एक अलग प्रेफरेंस होती है लाइकिंग और डिसलाइकिंग में. कोई कहता है जी हनीफ मोहम्मद बहुत बड़ा ओपनिंग बैट्समैन था, कोई कहता है सुनील गावस्कर बहुत बड़ा बैट्समैन था. इसी तरह आप देखिए पीपल हु हैव मेड 12,000 16,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, बहुत से लोग ये समझते हैं कि तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन था, गावस्कर ने उससे कम रन बनाए हैं, विव रिचर्ड्स ने तो सिर्फ 8-9 हज़ार रन बनाए हैं. मेरी नज़र में इन माई एस्टिमेट all the cricketers that have come across and covered their test debuts and their retirements all over the world, in every nook and corner of the world, traveled with all the great cricketers and came to know them very closely. I think the greatest batsman that I saw Javed Miandar. Sir Vivian Richards. The man who, when he walked out of the dressing room to bat, he gave his swaggering walk, his chewing the gum. It threatened the whole fielder, the opposite captain, the bowler, that he walked as if he is a millionaire in runs, the confidence that oozed out of him. उसके अलावा अगर आप बात करते हैं बैट्समैनों की, बॉलरों की, तो ये पर्सनल चॉइसेस और प्रेफरेंसेस होती हैं. मैंने तो तकरीबन 7 ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट में कवर की है. आई हैव कवर्ड 7 ट्रिपल सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट. आप सोच ले ज़रा. लेकिन जो ग्रेटेस्ट इनिंग जो मैंने टेस्ट क्रिकेट में आई हैव वॉच्ड वाज अ मैन हु मेड ओनली 94 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन बेंगलोर. गावस्कर. सुनील गावस्कर. मैंने इससे बड़ी टेक्निकली स्किल्ड इनिंग किसी इंसान, किसी बैट्समैन की दुनिया में देखी नहीं कि इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद गेंद कर रहे हैं स्पिनर, स्लो स्पिनर्स, और गेंद उनकी विकेट इतनी ख़राब थी कि गेंद मुंह पे आ रही है, चेस्ट पे आ रही है, कान पे आ रही है. मैं तो समझता हूँ कि वो अजीब, उसकी स्किल, अजीब टेक्निक थी सुनील गावस्कर की, कि ही मेड 94 रन्स बिफोर इंडिया लॉस्ट एंड पाकिस्तान वन द फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज़ इन इंडिया. इमरान खान कैप्टन था पाकिस्तान का, और उसने दूसरी इनिंग में जब बॉल, उसने विकेट देख ली थी कि ये तो बहुत ही ख़राब ट्रेचरस विकेट है, इस पर आदमी ज़ख्मी भी हो सकता है, तो उसने फास्ट बॉलर से बॉलिंग ही नहीं कराई, उसने शुरू ही करा दी स्पिन बॉलरों से गेंद. एंड दैट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान. I saw the first ever test victory of test series in India of Pakistan. I watched and cover the first ever test series victory of Pakistan in England. 1987. 1987 में. तो क्रिकेट जितनी भी आप देखें, अब जैसे अब मुझसे लोग पूछते हैं, अक्सर ये सवाल करते हैं कि कमर भाई आपने इतनी क्रिकेट कवर किया है, who do you think was the most elegant, most stylish, most graceful batsman that you have ever seen? And I come out with immediate answer that nobody was better than Zahir Abbas. He made only 5,000 runs, but the moment he walked into bat and he flicked the ball off the hip and this beautiful late cut, you see, आपको लगता था कि अजीब इंसान टोटली possessed है और क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहा है. कि आप देख के जब ज़हीर अब्बास विकेट पे होता था, या विव रिचर्ड्स फॉर दैट मैटर, और स्टाइलिश बैट्समैन तो डेविड गावर, गारफील्ड सोबर्स को मैंने देखा हुआ है,
और ग्रेग शैपल को, ब्रायन लारा, ब्रायन लारा, वीवी लक्ष्मण, बहुत ही स्टाइलिश, अजहरुद्दीन। लेकिन जो ज़हीर अब्बास की क्लास थी, तो ओनली उसको एशियन ब्रेड मैन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ही वाज द ओनली, ही इज़ द ओनली एशियन बैट्समैन जिसने, ही इज़ मेड 100 सेंचुरीज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नो जोक, नॉट इवन तेंदुलकर, नॉट इन गावस्कर, नॉट एनीबडी इन एशिया एक्सेप्ट सुनील ज़हीर अब्बास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिश बैट्समैन। उसने जब 200 ही स्कोर 274, आई वाज इन द ग्राउंड इन 1971, इमरान वाज ओनली 19 years old and I was in the test match at Edgbaston. अच्छा कमल भाई ये बताएं कि जो पाकिस्तान, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो इनोवेटिव कंट्रीब्यूशंस हैं टू द गेम, वुड यू से, जैसे मैंने बताई ना, रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्विंग, ये सब, नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि डू यू थिंक हमें उनका ड्यू मिलता है? डू वी गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर दैट और वी डोंट रियली गेट? We are very much recognized and historically documented Accused. that about reverse sweep. Accused. About reverse sweep you are talking. People say that it was because I was present in 1987 test, 1967 test match at Lords when Hanif Mohammad played one of the greatest innings. 187. 187 he made. He played a reverse sweep और लोगों की आह निकल गई ग्राउंड के अंदर कि ये क्या किया इसने, ये ऐसे कैसे घूम के मार दिया जो कभी ज़िंदगी में किसी ने देखा ही नहीं, कि लोग स्क्वायर कट मार रहे हैं, लेट कट मार रहे हैं, ड्राइव मार रहे हैं, ये हनीफ मोहम्मद ऐसे घूम के, और इसने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट आई बोल्ड अगेंस्ट इन माय लाइफ। तो उसके बाद मुश्ताक मोहम्मद ने मुझे कहा, मुश्ताक मोहम्मद को उसके डेब्यू पे मैंने आउट किया, फर्स्ट क्लास डेब्यू, और उसने मुझे आउट किया काज़म ट्रॉफी में। तो मुश्ताक कहता है कमर भाई नहीं, मेरे बड़े भाई हनीफ मोहम्मद ने रिवर्स स्वीप पहले नहीं खेला है, पहले तो मैंने खेला है काउंटी क्रिकेट में। तो मैं इस चीज़ आर्ग्यूएबल, लेकिन बात ये है कि अब जैसे दूसरा की आपकी बात, ये होबार्ट टेस्मानिया में मैं टेस्ट मैच कवर कर रहा था, वहाँ अंपायरों ने बड़ी बेईमानी की, पाकिस्तान जीत रहा था, पार्कर ने खासकर, गिलक्रिस्ट और लैंगर ने सेंचुरी बना दी उस अंपायरों की बेईमानी पर, और वो टेस्ट जीत गए। लेकिन उस मैच में एक लड़का था बिल्कुल जो किसी को जानता था नहीं, नोबडी न्यू हिम, एक नॉट ए सिंगल वर्ड ही कुड स्पोक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो उस ही टुक 6 for 41। तो इन द इवनिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट आस्क हिम, व्हाट डू यू कॉल दिस डिलीवरी दैट यू बोल लाइक दिस एंड इट डजंट स्पिन एंड इज गोड स्ट्रेट। तो उसने मेरी तरफ देखा, सकलैन मुश्ताक ने यूँ करके, अंग्रेज़ी उसको नहीं आती थी, कि शायद कमर भाई बीच में कुछ बोलेंगे, तो उसने कहा, उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने कहा दूसरा। तो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट और फ्लेबरगास्टेड कि ये तो उन्होंने मुझसे कान में कहा, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट, व्हाट डज इट मीन बाय दूसरा? मैंने कहा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके। तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट आस्क्ड मी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दूसरा? मैंने कहा इन लिटरल टर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा मीन्स द सेकेंड वन, बट इन क्रिकेट जार्गन इट मीन्स द अदर वन। तो उनको एक मिस्टीरियस किस्म का एक वर्ड मिल गया, दूसरा। तो नेक्स्ट डे पूरे ऑस्ट्रेलिया की अखबारों की हेडलाइन थी, द दूसरा। दैट्स हाउ आई केम अबाउट। मोइन खान, द पाकिस्तानी फॉर्मर कैप्टन, विकेट कीपर, से कमर भाई ये मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्या है। मैंने कहा क्या है भाई? ये इनोवेशन की बात। कहता मैं जब विकेट कीपर था तो किसी बैट्समैन को डॉज करना, रिसीव करना था, तो मैं सकलैन मुश्ताक को उर्दू में आवाज़ लगाता था, अबे दूसरा कर, दूसरा। तो इस तरह ये दूसरा निकला है। तो ये बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो कि अब ये साथ शफकत बैठे हैं। मैंने 740 वनडे कवर किए, मैचेस 9 वर्ल्ड कप 13 में से एज ए कमेंटेटर। इन्होंने मुझसे एक दिन कह दिया कि कमर भाई, मैं आई सी यू कम इन द T20 मैच इन नेशनल स्टेडियम, यू डोंट वॉच द मैच। आप ये HBL और फला लोगों से आप बात करते रहते हैं कि आप मैच नहीं देखते। ये तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ द गेम है T20। तो मैंने इनको फ़ौरन कहा, मैंने कहा कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट, ऑफ कोर्स इट इज़। मैंने कहा मोस्ट पॉपुलर फूड इन द वर्ल्ड फास्ट फूड है एंड इट इज़ अ जंक फूड।
उसके तो बाद IT से जंक फूड। मुझे चुप करा दिया। अच्छा, सो लेट मी, मेरा एक सवाल अब सलमान भाई के लिए है। देखें, कमर भाई ने मेंशन किया गावस्कर की इनिंग्स, बेंगलोर का जिक्र आया, तो जाहिर है इंडिया। So India is, you know, looming like a monster in world cricket today. And the reason I say monster is because it is hostile to Pakistan. अभी वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, आपको पता है हमें किस तरह से वीज़ाज़ नहीं मिले स्पेक्टेटर्स को, टीम का मूवमेंट्स इतने लिमिटेड थे, मुख्तलिफ जो पिचेस अग्रीड अपॉन थी उन पिचेस पे नहीं खिलाया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So how do you see Pakistan's future in the game given that India is becoming such a dominant presence in reality? I think the two are not naturally exclusive. I think we are both going through political processes that lead us to be confrontational. And as you pointed out at the beginning, I think the two things that unite Pakistan, one is cricket and the other is not liking India. So these are the two factors which bring this nation together. But equally, while we see this as a divisive thing, I think we've got to realize, and I think Shahryar Khan wrote a very good book called Bridges of Peace. So I think cricket can be a big bridge of peace between the two nations. If you look at the body language between players of the two teams, there is a lot of camaraderie, and there is a lot of goodwill and a lot of mutual respect and a lot of understanding. I think one of the ways that we could use this, for example, मेरा एक idea ये है कि why not someone takes the initiative and let the winner of the IPL play the winner of the PSL. And that can be an annual match. I think it will bring in 100 million people quite easily. Yeah. And I think this is the sort of thing that you need to do. Bahar jab jaate hain, you go to matches abroad, you see these players like in tandem with each other, walking hand in glove and great friends with each other. I still remember Yunus Khan ki main ek choti si aapko example deta hu. You know, on his last tour of England, he was desperately short of form and just fidgeting around and idhar se udhar jump kar raha tha. And I think Azharuddin rang him. Yes, that's and said, Yunus, stay in the crease, don't move around so much. And he stayed in the crease and got a double century. So I think this sort of spontaneous gesture, recently we were doing commemoration of Hanif's 499, and the comments that came from Sunil Gavaskar and Farooq Engineer were exceedingly complimentary. So I think we need to use sport for building bridges of peace. So I think Pakistan's future is good. Pakistan ke andar we need to, rather than focus on what others are doing, we need to clean up our own act. And if we can do that, I think things will go ahead. Go a long way. Okay, so we've had a lot of chat, a significant chat between the panelists, but it's now open to the audience for questions. So अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है हमारे panelists के लिए, जी please. Right in the, एक second, I think, is there a mic? बेटा mic है सवाल जवाब के लिए? Hello. हाँ ये सामने front. Next आपको मिलेगा जी. Thanks for the beautiful moments of cricket, especially the great West Indians Ted Dexter and Sir Vivian Richards. But when we see the current world cricket, we don't see the West Indies even in the World Cup. So what do you think the real causes of the downfall of the West Indies cricket? They were so colorful, they bring the colors in the cricket. And what we should learn from the West Indies cricket, the downfall, what we should learn the Pakistan to avoid these circumstances? Excellent question. Kamal bhai. West Indians ruled the roost for 15 years as the champions of the world in Test cricket and in one-day cricket, led by Clive Lloyd. He had great star batsmen and the bowlers, you name it, Haynes, Greenwich, Kalicharan, Kanhai, Clive Lloyd himself, Viv Richards, and all the great fast bowlers of the world. जिसे कहते थे लोग कि ये काली आंधी है, खौफनाक किस्म के fast bowlers. Andy Roberts, Michael Holding, Malcolm Marshall, Courtney Walsh, Ambrose, Patterson, Sylvester Clark. दुनिया कांपती थी उनकी बॉलिंग के सामने और दुनिया के चैंपियन खिलाड़ी सारे के सारे. ट्रेजेडी विद देम, ये लोग जो बातें करते हैं
ये चूँकि अमेरिका में ये बास्केटबॉल और बेसबॉल की वजह से क्योंकि वेस्ट इंडीज ने वहाँ जाके खेलने लगे, इट्स ऑल मिथ है ये। प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की जो है, एट वन टाइम all the great cricketers retired, went out. And West Indies is not a country. I have toured 9 tours of the West Indies, every island, beautiful, heavenly. ये conglomeration है different islands का, which is called West Indies. Every country, every island is a country with a parliament, with a prime minister, totally separate with a different currency. If I travel as a journalist to West Indies, मेरे passport की तबाही हो जाती है, इसलिए कि if in one island there are 2 matches, then 4 ठप्पे passport पे लग गए। अब आप समझिए कि मैं 10 island में गया तो passport तो मेरा ख़त्म हो गया। फिर जिस island में you go there is change of currency, वो सब सही है, लेकिन क्रिकेट की जहाँ तक बात है, वो उनको they are united by the game of cricket, left by the colonial masters. और आपको पता है कि एक से एक 3W, सर फ्रैंक वॉलर, क्लाइड वॉलकॉट, एवर्टन वीक्स जैसे लोग, विव रिचर्ड्स और ये सारे, क्लाइव लॉयड, सबको सर के खिताब मिले हुए हैं आइलैंड में, यू नो। तो ग्रेट क्रिकेटर्स दे प्रोड्यूस। ट्रेजेडी नाउ इज दैट majority of West Indian cricketers and youngsters are not interested, they don't have a role model in front of them. When you have a role model, you emulate, you copy, and you try to be what they were in the past. But West Indians have lost role models, the greatest cricketers of the world. Excellent point. The reason why the decline of the game in West Indies. Hello. कमर भाई एक छोटा सा मेरा और भी इसमें, you know, I mean, I totally agree with what you're saying, but I think one other addition is, you know, cricket is a legacy of the Raj, and ये सारे islands क्योंकि they were occupied by the Raj, so you know they have, in all the cricket playing countries, at least are countries, you know, from the time of the Raj. I think what has happened in the Caribbean is that the focus is shifting from the Raj to the US. बहुत important point. And I think this is a blind spot for us. And it's absolutely next door. Right next door, And yeah. some of them are part of the mainland. So I think basically जो American sport की influence है, NFL की है and और चीज़ों की है, basketball की है, that is attracting the Caribbean talent, and I think they are going into those sports which are popular in the US and which bring in substantially more money than cricket does. Than they are with games of the colonial past. And next question right in front, gentleman in the white shirt. लियाकत अब्बासी is here. मेरा कमर सर से सवाल है, वो ये कि यहाँ पे एक आम परसेप्शन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर एक मखसूस चॉइस है और मखसूस खिलाड़ियों को लिया जाता है, जबकि टैलेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसके बाद एक एहसास महरूमी पैदा होती है। ख़ास तौर पे टैलेंटेड जो प्लेयर्स हैं उनको यह एहसास होता है कि यहाँ पे जो है वो मेरिट को जो है मद्देनज़र नहीं रखा जाता। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। There was a time when players who played cricket for the country, they only came from Karachi and Lahore. There was not much cricket, not much domestic cricket. The game was not in every nook and corner of the world like today. उन्होंने पहले हाथ उठाया था. And the reason why not many cricketers were inducted in the Pakistani national team, and there was a lot of bias and discrimination, not only by the captain, by the so-called selectors of Pakistan. I was one of the victims of 1957 tour to West Indies, और सबसे ज़्यादा ट्रायल और उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम मैंने ली हुई थी। मुझे बाहर कर दिया इसलिए कि मैं हैदराबाद सिंध का था, मैं कराची लाहौर का नहीं था, मैं चूँकि सिंध का प्लेयर था। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड सो कॉल्ड selection by poor selection committees, it all accounted for what Pakistan cricket became. And yet, despite all these things and bias, Pakistan cricket kept on churning out some of the great and the finest cricketers of international cricket. Discrimination हमेशा से रही है.
अच्छा, वी रनिंग लो ऑन टाइम, आई वांट टू गेट मोर क्वेश्चंस इन। जी जेंटलमैन इन द, जी आप सवाल पूछिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद नवाब हूँ, प्रेसिडेंट बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब एंड एकेडमी। अभी मैं स्कीम 33 अमरवा सोसाइटी सफूरा गोट से आगे, वहाँ से एक हमारा मैच था। वहाँ मैंने देखा कि बच्चियाँ बाइक चला रही हैं, और वैसे भी मुल्क के सबसे बड़े शहर में अब लड़कियाँ बाइक चलाने लगी हैं। तो मैं हाबिल उबैद से ये सवाल करना चाहूँगा, और कमर साहब से भी एक सवाल है। वो सवाल ये कि इस तरह हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह, लालू खेत में भी बच्चियाँ स्कूटर चला रही हैं, क्या हम इससे अब ये समझें कि हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी माशाल्लाह इंप्रूव करेगी? एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त सवाल है हदील, राइट। और दूसरा सवाल ये जी, है जी। कि कमर अहमद साहब की किताब है खेल से कहीं ज़्यादा, तो अगर वो इसका उर्दू में ट्रांसलेट कहीं से करवा लें तो नवाजिश होगी। Excellent point. Hadil, zara women's cricket. I mean, you're representing the younger generation, but also your gender over here. So go True. ahead. So, women's cricket is definitely developing. 7-8 साल पहले, I think, when at least I started first working for women's cricket, I saw that एक hesitation थी. Maybe culturally or economically, in different ways, there was some sort of a barrier for women's cricket. Now, over the last at least 5 years, I would say 2018, 2019 say, ever since there's the Women's Big Bash League, ever since there are more women's leagues around the world, you're seeing more involvement of women's cricket everywhere. So even on a Pakistan level, there are small initiatives coming up. There are more women coming into the fold, and there's more women's cricket acceptance, more people aware that there's a women's cricket team, and more sort of excitement and structural work. PCB level par bhi, we are seeing more and more women initiatives, more things in the mandate. We're seeing more people want to grow the game. Even for my organization, Khelo Cricket, we are now looking at more and more areas, interior Sindh, Faisalabad, more places up north, KPK, where there's so much more talent of women's cricket. So we see it becoming something that is going to grow in this country and is going to continue to flourish. Hadil, अपना थोड़ा experience बताएं, because you've been holding these Ramzan girls Yes. cricket matches in Kokan ground, not too far from here. Very जरा उसका good. बताएं। So, you know, I would say my experience has gotten a lot better. हमने 2016 में पहले शुरू किया था. We were the only ones, and we still are the only ones, who do a women's Ramzan night tape ball tournament. And we have around 120 girls that actually participate. And when we first started this back in 2016, there was a lot of hesitation, because this was a space traditionally for men. लड़के क्रिकेट खेलते हैं रात को, हर ग्राउंड में रमज़ान में तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़कियां कहाँ से आ गई? और बट्टे करा रहे होते हैं। Exactly, and then it became, and we made it tape ball cricket, so it would be more accessible, ताकि जिन लड़कियों को क्रिकेट खेलना नहीं आता, पर जिनको शौक है, they would also be allowed. So then we started with that, and you know, we started with 4 teams, sort of just to see, is there any shock? And literally within 24 hours, we had about 300 registrations, and we said, okay, girls want to play cricket. And since then, it's just grown and grown and grown. In the last edition, it was about 10 teams, and we're seeing that जो resistance, there's more acceptance. Excellent. I think next question. Sorry, एक second. एक तो वो कमर भाई आपकी उर्दू ट्रांसलेशन की बात, किताब की वो आने वाली है, आ रही है, क्या है? मेरी जो ऑटोबायोग्राफी पहले यहाँ छपी, पैरामाउंट छपी, फार मोर देन ए गेम, It's available right here, right now. और अब इंग्लैंड में छपी है कोई 7 महीने पहले, वहाँ के पब्लिशर ने छापी है। मेरी ऑटोबायोग्राफी काफ़ी पॉपुलर है, अमेज़न पे है। उसका उर्दू मैंने, काफ़ी लोगों ने पाकिस्तान में कहा कि कमर भाई इसको आप अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करवा लें, ताकि जो लोग अंग्रेज़ी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते वो लोग उर्दू में पढ़ सकें। तो मैंने तर्जुमा तो करवा लिया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी, जो लोग उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं। Excellent. और महबूब शाह कोई सवाल करना चाहते हैं? अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, आपका सवाल। यस बॉस, आप तो VVIP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एज ए स्मॉल टाइम अंपायर मुझे बहुत सी बातें शेयर करनी थी। प्लीज़ प्लीज़। जैसे नहीं, यहाँ वो मौका नहीं है। एक और सेशन करेंगे। हाँ, तो वो बात तो अलग है। और मुझे एक सवाल है, फ्रॉम एन एमिनेंट क्रिकेटर ऑफ हिज डेज who played first class cricket for a number of years. He was knocking at the doors of international cricket. He created a first class bowling record by bowling 63 overs in a row from the same end. Wow. In one day. He is a retired brigadier. Salahuddin. And Salahuddin. This is a question on behalf of Salahuddin. अच्छा। वो ये कहते हैं कि साहब ये इतना जो चमक है क्रिकेट में, ये तो ठीक है, इतना सब इन्फ्यूज़ करने के बाद
क्रिकेट को क्या फ़ायदा हुआ, क्रिकेट एज ए गेम। अरे मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है कि मैंने जो ये तब्दीली देखी है उस वक्त से जब मतलब मेरी अपनी फ़ीस टेस्ट मैच की 50 रुपये होती थी तो उस वक्त से मैं अब तक का जब मैं वो करता हूँ तो मुझे क्रिकेट के खेल में दो तीन चीज़ें लगी हैं जो मुझे तब्दील हैं, जो मैं नहीं कर सकता। और क्रिकेट में एक बात ये थी कि जैसा कमर भाई ने बताया कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे और जो जिस बॉलर को हम खुद नहीं खेल सकते थे उसको हम अच्छा मानते थे या जिसको बॉलिंग कराते थे वो कुटाई करता था तो उसको अच्छा मानते थे, वरना हमारा कोई ऐसे ही थे सब। 19-20 का ही फ़र्क होगा। चलिए, तो मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि क्रिकेट की फील्डिंग बहुत बेहतर हो गई है। फील्डिंग क्योंकि ग्राउंड बहुत अच्छे हो गए, मशीनरी आ गई है और फिटनेस भी बेहतर हुई, फिटनेस बेटर हुई है। और बैटिंग में कुछ ऐसे स्ट्रोक दरियाफ्त हुए हैं जो क्रिकेट में नहीं है, आउट ऑफ क्रिकेट। स्कूप शॉट, स्कूप है, वो हवाई जहाज़ वाला और इधर वाला, ये पॉसिबल नहीं थे हमारे ज़माने में। यानी हमारे ज़माने में तो ये था कि चौका जो ठीक है काबिल कबूल था, छक्का नहीं था। राइट। यानी छक्का मारे तो वो फिर नाराज़ होते थे कि यार ये क्या तुम कर रहे हो। ब्रैडमैन 2-3 ही छक्के मारे पूरे करियर में शायद। वैसे महबूब साहब, आप जब अब बात कर ही रहे हैं तो मैं मेरा भी आपसे एक सवाल है। जी भाई, आफ्टर यू बेस्ट अंपायर फ्रॉम पाकिस्तान, अलीम डार, और वुड यू नेम समबडी एल्स? अब मैं नहीं, आपने कहना है, आपने। जितने अंपायर्स हैं ना हमारे, वो मेरे से जूनियर, न सिर्फ जूनियर हैं बल्कि मेरी क्लासेस में से निकले हुए हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या है, लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये थी कि मैं नेशनल अंपायरिंग काउंसिल का चेयरमैन था लॉन्ग टाइम एगो। हाँ, ओके। तो वो मुझे वहाँ से आईसीसी से एक वो आया कि कुछ ऐसे अंपायरों के, 2 अंपायरों के नाम दें जिनमें ये खुसूसियात हो या ये क्वालिफ़िकेशन हो। तो मैंने चारों तरफ देखा तो कुछ भी नहीं ऐसा मिल रहा था। नंबर 1 तो ये था कि एजुकेटेड पीपल। अच्छा, इस सब की बैकग्राउंड क्या थी? उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच विद योर न्यू जो करंट अंपायर्स है, क्योंकि वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं आ रहे थे और अंग्रेज़ी बहुत ही कमज़ोर थी। वो ग्राउंड से सवाल होता था, वो यस सर, इधर से वो नो सर वगैरह, और कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने कहा ये हमने क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया। नंबर 1 वाज कि दे शुड बी एबल टू कंडक्ट अंपायरिंग क्लासेस इन अदर कंट्रीज, मीनिंग यू मस्ट नो योर लॉज वेल, यू मस्ट नो योर इंग्लिश वेल। दूसरा ये था कि वो एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड तो हमारे यहाँ हर आदमी है, तो हो जाता है। तीसरा ये था कि दे शुड बी एबल टू अटेंड ग्रेट सेमिनार्स, यानी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए। ठीक है जी। आखिरी ये था कि दे शुड बी अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड, तो एवरीबडी वाज अवेलेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं थे। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कह देता हूँ जी हमारे यहाँ तो ऐसे लोग नहीं हैं, तो एक सीट चली जाएगी ना। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि जो देखते हैं सबसे बेहतर होगा उसको करके ट्रेन करेंगे। तो इन सब का मैंने नाम कर दिया था। तो इमीडिएटली मैंने जैसे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया वहाँ, तो मैंने इनसे कहा कि आप अंग्रेज़ी ठीक कर लें अपनी, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें। तो और ये आप नाम ले सकते हैं, कौन था ये अलीम डार की बात करें। अच्छा, तो वो कई दिन हो गए, दाखिला वाखिला कुछ नहीं हुआ। फिर वो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कहने लगे हाँ मैं इधर गया था उधर गया था। मैंने कहा भाई साहब आप दाखिला लेके उसकी जो फीस या जो भी कोई वो है वो मुझे भिजवा दें, मैं उसको पे करवा दूंगा। तो आपने काफ़ी स्टार्ट दिया इनको। जी आप अच्छा, निहायत एहतराम के साथ सर, वो टाइम ख़त्म हो रहा है। 1-2 लोग और बड़े पेशेंटली, अफजल भाई बड़ी सब्र से वेट कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ लें। हाँ चलिए जी सर, अफजल भाई। Earlier you were talking about. आपका माइक ऑन नहीं है। Hello, Doctor Sahab. Earlier you were talking about administrator of cricket in Pakistan. I want to know, Kamar Sahab, how do you see the role of Justice Cornelius, the first administrator and a real mentor of Pakistan cricket?
Justice Cornelius ji. I met Justice Cornelius in the 50s. He was the pioneer and called cricket father of this country. A great judge and pioneer of cricket administration in Pakistan. He was never a chairman. He was the vice chairman of Pakistan Cricket Board, and he started Pakistan's first class cricket in 1953, which is called the Quaid-e-Azam Trophy. उनसे बड़ा पाकिस्तान में कोई क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेटर हुआ नहीं. उनके बाद फिर नूर खां को मैं समझता हूँ कि वो ग्रेट एयर मार्शल नूर खां न सिर्फ क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश सब के वो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे और प्रॉपर इंटरेस्टेड इन द गेम एंड न्यू द गेम. अच्छा, सो वी गोइंग टू रैप दिस अप. बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है. रैप अप करने से पहले जो आखिरी एक तीनों के लिए एक सवाल आई एम थ्रोइंग आउट, बिकॉज हमारी टीम जो है अब मॉडर्न टाइम्स में आ जाते हैं. हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाली है. शान मसूद कप्तान है. सिलेक्शन सब हमने देख ली है. पिछले 14 टेस्ट मैचेस लगातार जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले हैं हम हारे हैं. और मेरा इस दफ़ा 3 टेस्ट मैचेस हैं इंक्लूडिंग द फेमस द ट्रेडिशनल बॉक्सिंग डे टेस्ट. मेरा सवाल तीनों से ये है, स्टार्टिंग विद सलमान भाई. Will we be able to forget winning, or will we be able to at least save a test match in this series? Yes or no? One word. One word. 1 out of 3 we'll be able to save. 1 out of 3. Okay. Hadil? 0 out of 3. 0 out of 3. Kamar bhai, aap bataएं. We have won test matches, isolated test matches in Australia under Mushtaq Mohammed's captaincy in 1977, 1979. When Sarfraz took 9 for 86. Pakistan never won a test series in Australia. I don't think they will be able to because of the present team, because the selection committee doesn't pick the proper team, unbalanced as it was in the recent. So score line, Kamar bhai, 0-3? So I fear that they will be demolished. I see. Achha, I'm predicting we will save at least one test match. I'm with Salman Fareedi. Everyone, the wonderful audience, excellent questions, and a fantastic panel. Thank you very much. Yvonne, play, check, play.